Good morning to all of you. This is Nagma, your biology teacher, and welcome to the Sims Official. In the last video, we were talking about the prokaryotic cells. We are dividing the cell in two categories on the basis of complexity of nucleus. So, let's proceed. In eukaryotic cells, U means होता है students true and karyons means होता है nucleus. Those cells having a true nucleus are called as eukaryotic cells, and these cells are found in the in the protista, fungi, plants, and animal also. Cells with possess an organized nucleus with the nuclear envelope means जिन सेल्स के पास एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है हैविंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस अराउंड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट, it's called the complete eukaryotic cell, and cells covered by a cell envelope which is plasma membrane और cell membrane. हम जानते हैं that cells के चारों ओर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम cell membrane या plasma membrane बोलते हैं. Okay. Eukaryotic cells have the cytoskeletal structure and membrane bound organelles. Eukaryotic cells के पास हमारे inside the cell membrane bound cell organelles present होते हैं, and उसकी वजह से ही they perform the various activities. The genetic material which is present in eukaryotic cell is organized into a chromosomes. Okay, so all the eukaryotic cells are identical? No. All the eukaryotic cells are not identical. Plants and animal cells are different as the former possess. Plants cells contain cell wall outside the plasma membrane. The outermost covering of plants is the cell wall, and in animal it's a plasma membrane. Plants are also contain the plastid and large centrally located vacuole. You can see here in the diagram that the large centrally located vacuole are present in the plant cell, and animal cells contain centriole which is helpful in cell division processes. So this is the basic structure of cell. The cell is composed of three main feature: the outer covering which having the cell wall and plasma membrane, the nucleus which, the nucleus is also called the headquarter of the cell and controller system of the cell, because all the various activities are controlled by the nucleus. And cytoplasm, the fluid of cell, it is called cytoplasm. When we are talking about cytoplasm and nucleus, the cytoplasm and nucleus combine and form the protoplasm. The first we have the cell membrane. The cell membrane is the most important feature of the cell because it's provide the protection of the cell and the cellular structure of the cell. It's provide the complete structure. हमारे जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के ही वजह से होता है. सेल मेम्ब्रेन ही हमारी सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है. एंड it's a selectively permeable membrane. ये हमारी एक selectively permeable membrane होती है. It is the most outer layer of the cell, absolute requirement for all living organisms. And the chemical studies done especially on the human red blood cell in RBCs. The scientists deduce the possible structure of plasma membrane. It is mainly composed of lipids and protein. हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो lipids and proteins की बनी होती है. The ratio of protein and lipids varies considerably in different cell types. Okay. So here is the chemical composition of plasma membrane. That plasma membrane contain lipids, protein, and carbohydrates. In lipids, they contain the phosphoglyceride, sphingolipids, and esterols. In protein, they have the integral, peripheral, and lipid anchor proteins. This is the models of plasma membrane. The Gotters and Grendel first time proposed that membrane contain a lipid bilayer on the basis of surface area of RBC. The cell membrane models have two of types: the lamellar sandwich model and the mosaic model. In lamellar model, the first model was proposed by the Danelli and Davison, and the second one we had the proposed by the Robertson model. You can see in the diagram also. Here's the Davison model which is proposed by Danelli and Davison in 1935. Okay, and this is the Robertson model which is a modified model of the Davison model. Okay,
So in Daneley model, he proposed that biomembrane contains 4 molecular layers, that means 2 layers of phospholipids and 2 of proteins, and the phospholipid bilayer is covered on either side by layer of hydrated globular or alpha protein molecules. So in Robertson model, this is the modified model of the Robertson Daneley, and he said that bilipid bilayer is covered on the two surface by beta protein molecules, and he gave the concept of unit membrane. So this is the fluid mosaic model of plasma membrane, which is the acceptable model of plasma membrane, and he proposed this model is proposed by the Nicholson and Singer, according to which the lipids, mainly phospholipid, shows the lateral movement like fluid. उन्होंने बताया दैट जो हमारे बाय लेयर में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो लैटरल मूवमेंट शो करते हैं लाइक फ्लूइड, एंड विच इम्पोर्ट द डायनेमिक नेचर टू द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में डायनेमिक नेचर प्रोवाइड करते हैं. एंड वाइल द प्रोटीन अपीयर एज द मोज़ैक, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर एज इट्स फ्लूइडिटी. According to this, the model membrane does not have uniform disposition of lipids and proteins. इसमें इसी मॉडल की वजह से हमें ये पता चला दैट जो हमारे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स में लिपिड्स एंड प्रोटीन का डिपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है. प्रोटीन अकर एट प्लेसेस इन द लिपिड बाइलेयर एज द आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स. द इंटरनल प्रोटीन्स आर कॉल्ड intrinsic or integral protein, while the external ones are known as the extrinsic or peripheral proteins. Integral proteins accounts for 70% of total membrane proteins. These protein cannot be extracted from the membrane without disturbing it. जो हमारी membrane प्रोटीन प्रेजेंट होती है membrane के अंदर, अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो विदाउट membrane को डिस्टर्ब किए हुए बिना नहीं कर सकते हैं. Some integral proteins are called as transmembrane protein. So here is the diagram of fluid mosaic model. You can see in the screen the fluid mosaic, the integral protein, and here is the peripheral protein. The glycoprotein and glycolipids are present in this. This is the extracellular fluid, and this is the cytoplasmic region. So this is the some function of plasma membrane, that the plasma membrane plays a main role and plays the most important functions of cell. The membrane is selectively permeable. One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecule, क्योंकि this is the outermost covering of the cell, इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स में बहुत मेन रोल प्ले करती है. कैसे? कुछ जो मॉलिक्यूल्स हमारी मेम्ब्रेन सेल के अंदर आना चाहते हैं, विदाउट द परमिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे कांट एंटर. मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे विदाउट एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बिना ही मेम्ब्रेन से मूव करते हैं एंड सेल के अंदर एंटर होते हैं. बट ये इस प्रोसेस को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ओके, जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूल्स को नहीं होती है. सम न्यूट्रल सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. वो क्या, द कंसनट्रेशन अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं हमारे मेम्ब्रेन में वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि वो अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं. वाटर में ऑल्सो अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन. हमारा वाटर जो है मेम्ब्रेन के अंदर मूव करता है, कहाँ पर? जिस रीजन में वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है एंड जहाँ जिस रीजन में वाटर की कंसनट्रेशन हाई होती है वहाँ से हायर टू लोअर ग्रेडियंट में ये मूव ऑन करता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. इट्स अ पार्ट ऑफ द डिफ्यूजन. So as the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer, जो हमारे कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं. सो दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. कुछ हमारे ions जो होते हैं membrane से against the concentration move on करते हैं. उसी के लिए उसको किस चीज़ की नीड होती है? दे रिक्वायर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
ATP, and they utilize the ATP, and is in such a kind of transport is known as the active transport. For example, the sodium and potassium pump. So this is all about the today's lecture, and in the next lecture we will talk about the next topic. So till then, like it, do share and comment below in the comment section. Thank you so much.